A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome to my channel Chemistry with Zeeshan Ahmed. Today we are going to discuss strong acid and weak acid. Let's start the topic. अच्छा, अब इस टॉपिक में हमें एसिड की दो टाइप को डिस्कस करना है. पहली टाइप स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरी टाइप वीक एसिड. इन दोनों टाइप को हम ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन डिस्कस करेंगे कि कौन सा एसिड ज़्यादा डिसोसिएट होता है और कौन सा एसिड कम डिसोसिएट होता है. सो स्टार्टिंग विद द बेसिक डेफिनेशन, एसिड्स विच कंप्लीटली डिसोसिएट हाइड्रोजन आयंस, acid which completely dissociate hydrogen ions in water. Hydrogen ions means H positive ions in water or aqueous solution. तो हम ऐसे एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं. These acids are considered as strong acid which have tendency to give H positive ions. For example, examples are, we have hydrochloric acid which is HCl, we have a strong acid H2SO4 which is sulfuric acid, and we have HNO3 which is nitric acid. They are strong acid because they have tendency to completely ionize or dissociate H positive ions in water. अब हम एक एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग हाइड्रोजन क्लोराइड. सिर्फ समझाने के लिए मैं ये कह देता हूँ कि मेरे पास हाइड्रोजन क्लोराइड के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, और हम सिर्फ इसको समझ सकें ताकि बात को. हाइड्रोजन क्लोराइड को जब वाटर में डिसॉल्व करूँगा तो इट विल गिव, हाइड्रोजन क्लोराइड इज मेड अप ऑफ 2 आयंस विच इज H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. वाटर में डिसोसिएट होने पे विल गिव H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन. दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन. कि जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक हो रहा है, H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव. तो हम ये कहते हैं कि मेरे पास जो 10 मॉलिक्यूल्स है उसमें से अराउंड 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो गए हैं वाटर में, और उसमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऐसा था जो ब्रेक नहीं हुआ. तो हम ये कहेंगे कि जो डिसोसिएशन है ये अराउंड 99% डिसोसिएशन है, 99% आयनाइजेशन हुई है, विच इज सपोज टू बी कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. अब इस पूरे सॉल्यूशन में, इन दिस होल सॉल्यूशन वी हैव higher concentration of H positive ion. We have higher concentration of H positive ion. अब अगर मैं इस सॉल्यूशन की pH चेक करूँ, if I am going to checking the pH, the pH would be less than 4 because it is a strong acid. ये पूरा होल प्रोसेस, दिस होल प्रोसेस, द होल आयनाइजेशन इज रिप्रेजेंटिंग इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन लाइक HCl dissolve in water to give H positive and Cl negative ion. In a similar way, H2SO4 dissolve in water to give H positive ion, and the negative is sulfate ion, SO4 2 minus. This is sulfate ion. But remember one thing, in H2SO4 we have 2 H positive ions. We have 2 H positive ions, so we need to balance like this. This is supposed to be chloride ion and this is supposed to be sulfate ion. एग्जाम में जिस वक्त इक्वेशन लिखने की बारी आती है तो हमेशा याद रखना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, always represented by a single arrow. The next one is weak acid.
स्ट्रॉन्ग एसिड तो वो होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएं. वीक एसिड आर सपोज टू बी दोज एसिड विच पार्शियली डिसोसिएट hydrogen ion. They have tendency to give partially dissociation of H positive ions in water or aqueous solution. In water or aqueous solution. And the examples are hydrogen fluoride or CH3 COOH, which is acetic acid. We have HCOOH, which is formic acid. These two are supposed to be organic acid, which is weak in nature. They are partially dissociate. जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड में आपसे बात की कि हमने HCl को वाटर में डिज़ोल्व किया था और वो अराउंड 99% डिज़ोल्व हो गया था. तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, आई एम टेकिंग फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग CH3COOH, which is acetic acid. CH3COOH. This acetic acid contains two ions, CH3COO negative एंड H पॉजिटिव आइंस, विच मीन्स के वाटर में डिजॉल्व होंगे. तो मुझे कौन कौन से आइंस मिलेंगे? एक एसिडेट आइन मिलेगा विच इज CH, विच इज एक मुझे एसिडेट आइन मिलेगा, राइट, और एक मुझे H पॉजिटिव आइंस मिल रहे. जिस तरह वहाँ पे हमने बात की, आई एम टेकिंग फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अराउंड अगेन 10 molecules ऑफ CH3COOH. तो इट इज़ पार्शियली डिसोसिएशन. सिर्फ समझाने के लिए ये बात कर रहे हैं कि जब वाटर में एसिटिक एसिड डिजॉल्व होगा तो इसके सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर में डिजॉल्व होते हैं. ओनली फ्यू विल गिव H पॉजिटिव आयन, ओनली फ्यू. एंड मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विल रिमेन इंटैक्ट और विल रिमेन सेम विदाउट ब्रेकिंग इनटू आयंस. बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो आयंस में ब्रेक नहीं होंगे. तो वी कैन से दैट कि फॉर एग्जांपल इन 10 में से सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स आयनाइज हुए. तो वी कैन से दैट कि जो डिसोसिएशन है वो 50% है, या 50% से भी कम है. अब इस सॉल्यूशन में, इस पूरे सॉल्यूशन में विल हैव less number or less concentration of H positive ion. अब अगर इसकी pH चेक करते हैं तो pH would be greater than 4. The pH would be greater than 4 for this solution. अब बात करते हैं कि how can we represent this in form of equation. देखो CH3COOH dissolve in water to give CH3COO negative and H positive ion. और remember one thing, equation of weak acid की equation हमेशा डबल एरो से रिप्रेजेंट की जाती है, ये बात भूलना नहीं. Equation of weak acid always represented by double arrow. For example, if I am taking HCOOH, which is formic acid, it will give H positive ion and COO HCOO negative would be the polyatomic ion. Now we are going to discuss the exam based question कि एग्जाम में ये सवाल किस तरह से आते हैं और हाउ कैन वी रिलेट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, और हम किस तरह से उसको एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. हाइड्रोजन आयोडाइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रो आयोडिक एसिड. वी हैव गिवन द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रो आयोडिक एसिड विच इज HI.
हाइड्रोआयोडिक एसिड इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी रिप्रेजेंट कर दिया इन्होंने, ये भी बता दिया. एक्सप्लेन विद एन एंड ऑफ एन इक्वेशन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म स्ट्रॉन्ग एसिड. 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. हमें क्या क्या लिखना है, हमें एक तो एक्सप्लेनेशन देनी है विद इक्वेशन. हमेशा याद रखें कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड या कोई एसिड दिया हुआ है, गिवन है, तो फिर वही इक्वेशन में यूज होगा. वी आर बाउंडेड टू यूज दिस हाइड्रोजन आयोडाइड इन इक्वेशन. So I am just starting with the equation hydrogen iodide dissolve in water to give H positive ion and I negative ion. Fine. अच्छा, अब we need to explain this as well. So strong acid क्या होते हैं, which completely ionize or dissociate or give H positive ions in aqueous solution. दिस इज द आंसर. अब एग्जामिनर करेगा क्या, 1 मार्क आपको इस इक्वेशन के दे देगा एंड ही विल गिव यू अनदर मार्क फॉर दिस स्टेटमेंट. द सेकंड क्वेश्चन इज सल्फेमिक एसिड इज अ वीक एसिड. अगेन क्वेश्चन में ही बता दिया कि इट्स अ वीक एसिड. वी हैव गिवन द फॉर्मूला ऑफ सल्फेमिक एसिड एज वेल. Explain with an add of an equation what is meant by the term weak acid. Again I am going to starting with the equation SO3 NH3 इक्वेशन को देख के या फॉर्मूले को देख के परेशान होने की जरूरत कोई नहीं होती. यू नीड टू जस्ट आयनाइज 1 H पॉजिटिव आयन. एक H पॉजिटिव आयंस को आप सेपरेटली शो करें एंड द रेस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ एटम विल कंसीडर्ड एज पॉलीएटॉमिक आयन. कैसे, अब इस SO3 NH3 में से मैं करूँगा क्या, एक H पॉजिटिव आयन को सेपरेट कर दूंगा. द रेस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ एटम विल सर्व एज पॉलीएटॉमिक आयन विच इज CaO3 NH. तो थोड़ा सा H positive ion and CO3 NH2 plus, and this group of atom will considered as negative charge, and we represented this equation with double arrow. Now I need to explain weak acids क्या होते हैं. Weak acids are supposed to be acid which partially dissociate or ionizes H positive ions in aqueous solution. Thanks for watching.